Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 2.5 में क्वेश्चन 4 फर्स्ट पार्ट है, हमने डिफरेंशिएट करना है कॉस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x. Differentiating with respect to x, so derivative of y equal to derivative of cos पहले cos का डेरिवेटिव माइनस साइन to square root of 1 plus x over 1 plus 2x, and then derivative of 1 plus x over 1 plus 2x. So dy by dx is equal to minus sine 1 plus x over 1 plus 2x. यहाँ क्वेश्चन फार्मूला लगाएंगे 1 plus 2x as it is into derivative of 1 plus x minus 1 plus x as it is into derivative of 1 plus 2x. So dy by dx is equal to minus sine 1 plus x over 1 plus 2x whole square root 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, फिर 1 प्लस x एज इट इज 1 का डेरिवेटिव 0, 2x का 2, then divided by 1 plus एंड फिर अलग अलग पावर इनकी ले लेंगे. dy by dx is equal to minus sine square root of 1 plus x over 1 plus 2x वन बाई टू, ये 1 प्लस 2x माइनस 2x 1 प्लस 2x ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई होंगी तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी और 1 प्लस एक्स होल पावर माइनस 1 बाई 2 को डिनोमिनेटर में पॉजिटिव के साथ 1 plus x power 1 by 2. ये 2x से कैंसिल करेंगे. This is minus 1 by 2 sine of square root of 1 plus x over 1 plus 2x. ये minus 2 plus 1 minus 1. This is 1 plus 2x power 3 by 2 और पावर प्लस 1 by 2 है इसलिए हम इसे स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं. ये माइनस माइनस प्लस कर लेंगे 1 by 2 into square root of 1 plus x
sine of 1 plus x over 1 plus 2x. पहले cos का डेरिवेटिव लिया माइनस साइन के साथ, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x का लेना है। पहले पावर फॉर्मूले से पावर पीछे पावर माइनस में, और क्वोशिएंट फार्मूला 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x पे लेना है। क्वेश्चन 6 में tan y into 1 plus tan x is equal to 1 minus tan x, और इसमें हमने शो करना है कि dy by dx is equal to -1 होता है। ये ऐसा डायरेक्ट भी हो सकता है, और अगर थोड़ा सा हम इसे कन्वर्ट कर लें 1 माइनस टेन एक्स ओवर ये 1 प्लस टेन एक्स, ये 1 प्लस टेन एक्स इधर डिवाइड कर दिया है। अब टेन पाई बाई 4 क्योंकि 1 होता है इसलिए हम इस 1 को tan पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स ओवर 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan एक्स लिख लेते हैं। tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 है, इसलिए यहाँ 1 की जगह tan पाई बाई 4 और इस tan x की जगह भी tan पाई बाई 4। ट्रिग्नोमेट्री में हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है tan अल्फा माइनस बीटा, दिस इज tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो ये फार्मूला यहाँ यूज करेंगे, तो दिस इज tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, y is equal to pi by 4 minus x। इसे आप डिफरेंशिएट कर लें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये अब सिंपल डिफरेंशिएशन आ गया आपके पास। पाई बाई 4 कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, x का 1 आएगा, दिस इज dy by dx इक्वल टू -1। तो इस कन्वर्शन से इसका डेरिवेटिव आसान हो जाएगा। वैसे भी प्रोडक्ट लगाएं या इसको डिवाइड करके क्वोशिएंट भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह tan अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूले में लेके जाएंगे इसकी सिंप्लिफिकेशन आसान हो जाएगी।